चैप्टर हो गया होगा अभी तक, या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डीलिंग विद इट? फर्स्ट सर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो बट दैट द चैप्टर नेम अगर सब ने देखा रहेगा, व्हाट डज इट से? सेल्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक सब लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया ही होगा लाइक व्हाट इज सेल, बिकॉज वी सर ऑल। यस, आपका आवाज बहुत धीरे से आ रहा है। सबको ऐसे ही हो रहा है या ओनली यू? आई एम नॉट वेरी श्योर। बराबर है सर, थोड़ा सा कम है, थोड़ा बराबर है, बराबर है सर। क्लियर। Yeah, okay. So actually from my side volume full है, just try your network. I will try to speak loudly, थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूंगा, but I will try. Okay. So मैं बात कर रहा था the chapter name itself, the sales structure and organization. तो हम लोग सब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, right? तो I think all of you are having थोड़ा बहुत आइडिया कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, और उसका बेसिकली मतलब what is the role? Why do we need to study a cell, right? So who can tell me what is a cell? Just unmute yourself and you can say what is a cell. Structural and functional unit of life. functional unit of life. Fundamental unit of cell. Yes, so that is absolutely correct answer. I think सब लोग को पता है. It is a structural and a functional unit of life. Now everyone is telling me this fundamental, structural and functional unit of life because हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं. We are just rectifying this. अभी इसका exactly मतलब क्या है? Structural and functional unit. वो क्या होता है? That we will be discussing in a next slide basically. But for now, yes, I'm happy that you all know what is a cell. Next, who observed the cells under a microscope for the first time? Any idea? Robert Hooke. Robert Hooke. Yes. It was Robert Hooke who discovered the cell सबसे पहले in 1665. Just imagine, like almost 4 centuries before. So 1665 में Robert Hooke was the first one जिन्होंने cells को observe किया था under microscope. So अभी हमने देखा कि okay, he had observed under microscope, but then ये microscope कहाँ से आया? Who discovered the microscope? Yes, for difficult, but nothing to worry. It was Zacharias Janssen in 1590. He was the first one who actually discovered the first microscope और जो यूज करके फिर आगे का स्टडीज किया गया था. Just imagine that if you can just look at the years, इतने सालों से हम लोग सेल्स को स्टडी कर रहे हैं. We are trying to study in detail, and still even today, and I think इससे आगे आई थिंक सो मेनी डिकेड्स, आई डोंट नो कितना और साल हम लोग करेंगे, वी विल बी कंटिन्यूइंग टू स्टडी द सेल बिकॉज ये जो सेल जो हम लोग इतना इजीली बोल रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बोलने में जितना इजी है, इट्स नॉट एक्चुअल में इतना इजी टू स्टडी. इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम and it is not that easy to understand its structure and function to us. तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली टेक्निक्स आर इन्वॉल्व टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सेल, वो सब हम लोग ये चैप्टर में कवर अप करेंगे. नाउ आई थिंक ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हाउ डू अनियन पील सेल्स एंड आवर बॉडी सेल्स डिफर? शायद थोड़ा लॉजिकल है. सो एनीवन डू यू नो हाउ कैन वी डिफर? Plant cell or animal cell? Yes, that is correct answer. One is a plant cell and one is an animal cell. Agreed. But what is the basic difference between plant cell Cell and wall. There is no Cell wall. Yes. You all are very intelligent, I must say. So it is a plant cell wall which differs, and because cell wall is only present in a plant cell and it is absent in a animal cell. That is absolutely correct. Now the last question for revision, and then we will start the chapter. Why bacterial nucleus is said to be primitive? I think सबको पता है कि हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है which is actually a controlling center, मतलब वो सब पूरे सेल को कंट्रोल करता है. बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, जो कि या फिर सम केसेस में आरएनए होता है, बट देन डीएनए, लेट्स टेक डीएनए, जो एक्चुअली सबको कंट्रोल करता है. बट देन इन बैक्टीरिया हम लोग
न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोलते, we call it something else. Anyone knows what do we call to such nucleus in bacteria? Nuclear has no nuclear membrane. Yes. What is your name? Sharon. Yes, absolutely correct. It is called as nucleoid because there is no well-developed nucleus in a bacteria, because bacteria is a prokaryote. It is not a eukaryote, and we all are a eukaryotic animals, right? So in case of bacteria, or I can say in all the prokaryotic animals, a properly developed nucleus is not present. However, they have nucleoid, which is just a mass of a particular area dedicated to the place, like this is a particular place which is dedicated for the typical nucleus like structure, but it is not a well developed nucleus. And obviously, as he correctly mentioned, that there is no nuclear membrane. So with this, I think सब लोग का थोड़ा brush up हो गया रहेगा. What is a cell and what are the basic concept behind it. Now, I would like to give you a brief about why do we need to study cell and what is a cell. उसका size क्या है, उसका shape क्या है, और अगर मुझे अभी cell को study करना है, then how can I do it? Okay. So as you all correctly said, cell क्या होता है? It is a structural and functional unit of a life. Can you tell me why it is called a structural unit? क्यों बोलते हैं उसको structural unit? Because every organism made up of cell. Yes, that is a exactly correct answer. So I would like to sort of reframe it, because each and every part of our body is made up of a cell. So basically a cell, बहुत सारे सेल एक, सबसे पहले एक सेल रहेगा, फिर बहुत सारे सेल एक साथ आके दे कैन मेक अ टिश्यू, एंड बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आके दे विल मेक अ ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आके दे विल मेक अ टिपिकल ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. That's why cell is considered as a basic structural unit. And now why functional? Because each cell, I'm very precise in saying, each cell is having a typical structure and a complex system within it. तो हर एक सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, which actually contribute towards a particular function. So let's take an example. पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में कौन से सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं? एनीवन? Glucagon. Okay, not glucagon, but then yeah, I'm okay. So Beta. Beta cell. Yes, it is beta cells. So beta cells of the Langerhans actually are the one which secretes the insulin. The one who secretes glucagon, actually alpha cells are there in the pancreas जो secrete करते हैं glucagon, and there is something called as the gamma cells also जो secrete करते हैं somatostatin. तो जस्ट इमेजिन एक ही ऑर्गन है पैनक्रियाज, और उसके अंदर भी ये 3 टाइप्स ऑफ सेल है, एंड इट्स नॉट इवन अ कंप्लीट पार्ट, इट इज जस्ट अ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ अ पैनक्रियाज व्हिच कंटेन्स दिस 3 सेल टाइप्स ऑफ सेल्स, और वो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, insulin and somatostatin. Now I am talking about the insulin. Why do I need the insulin? Because it actually helps me to control the blood sugar level. So these are the cells, these are the beta cells which are having the typical properties which are actually contributing towards the function. It's not like हर कोई सेल जो मेरे बॉडी में रहेगा that will contribute to the same property. No, this particular beta cells are having specific structure, specific function, जिसके वजह से they are contributing or they are giving or they are showing us this typical property. And that's why it is importantly called as a functional unit, because they are not just contributing to the structure, but they themselves are contributing towards the function of a particular system. And that's why cell is called as a structural and a functional unit of our life. Okay, and these cells are actually capable of independent existence and can perform all the functions of the life. So we have different types of cells, starting from, अगर हम लोग देखें even a skin cells, अगर हमारे पास जो skin है, that is a typical epithelium tissue we generally call.
वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, वो हम लोग के बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है. We have a, as I mentioned, pancreatic cells, we have a liver cells, we have a cardiac tissues और a cardiac cell जो हार्ट में रहते हैं. So each of our body, each part of our body is having a typical special types of a cell जो कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. So do you have any idea कितना, like the number of cells present in our body? It is almost in a trillions, like beyond counting. But still now we have different techniques, we are doing a lot of advancement in a technology that now somehow thoda statistic use karke we can calculate the number of cells, but still we still don't have a proper information. Even the function we never know, कभी कोई सेल क्या फंक्शन दिखा दे पता ही नहीं. हम लोग को पता है कि ओके एक पर्टिकुलर सेल है जो लेट्स से एक कोई तो फंक्शन एक्स कर रहा है, बट इट इज हाईली पॉसिबल दैट कि अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शन एक्स द सेल कैन आल्सो डू समथिंग एल्स which is not even known it. And that's why I said ना कि हम लोग इतने सालों से सेल बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, and we will be continuing to study the cell biology for many more years इससे आगे भी, because the cell is highly complex and now it keep on showing us some different types. So अगर मुझे cells को classify करना है तो there are normal cells, there are stem cells. I will talk about the stem cells in the next part. There is a cancerous cells. There are cells which are completely in a quiescent stage because they cannot divide at all. There are cells like a neuron, so they can start from the brain and they can grow till the toe of my body. मतलब इतने लंबे भी हो सकते हैं, even a single cell. Just imagine. So these are some peculiar functions and peculiar properties shown by the cells, which makes them a unique thing, and that's that they are considered as a structural and functional unit of a life. So अगर मैं size consider करूँ, so let's think कि what will be the typical size. So a typical bacterial cells अगर मुझे बात करनी है, it goes from the 1 micrometer to the 5 micrometer के scale में. When I say micrometer, it is nothing but 10 raised to -6 meter. Okay, I hope you understood the scales. अगर किसी को नहीं समझ आए, feel free to ask. Okay, but then there are some viruses which are considered as a negative, which are considered as a obligate parasite basically. Now why obligate parasite viruses? A very common example, अभी हम लोग सब एक वायरस के वजह से सब लोग घर पे बैठे हैं and we are doing this online things. Why? Because these viruses are very difficult to study. क्यों ऐसा है? Because they are not completely living thing, they are not completely non-living thing. Just give me a minute, just a minute. Yeah, sorry. So why so? Because they are not considered completely living or completely non-living. जब भी ये viruses बाहर रहते हैं, they act as a non-living system. They don't consider as we cannot consider them as a living system because they are just like a particle when they are present outside the body. But the moment वो अपने body के अंदर घुस गए, like not only human beings, any living body, जिसको हम लोग host बोलते हैं, so they will start dividing and they will start showing the effect. Just the way the corona is now showing. कोरोना किसकी वजह से होता है? The SARS-CoV-2 virus, severe acute respiratory syndrome, COVID-2, right? So there are many other viruses as well. So इनका size क्या है? Their size actually varies from the nanometer size में जाता है. Then there are some other small molecules like proteins are there, carbohydrates are there, lipids are there, nucleic acids are there, which all are called as a typical biomolecule. So these typical biomolecules actually have a size of 1 nanometer to the 10 nanometer. Below that, then there are different carbon molecules, there are different atoms and all, which actually go in a range of 0.1 nanometer to the 1 nanometer. So just imagine the cell, जो सबसे पहला सेल आता है, we can say from the bacterial cell, जिसको हम लोग ट्रू सेल कंसिडर कर सकते हैं, that starts from the 1 micrometer and above, which is a prokaryotic cell, which is already around 10 times larger than a typical atomic size. उसके आगे अगर मुझे जाना है towards a eukaryotic cell, which is the most developed cell we can say, or
evolved cell as compared to the prokaryotic cell, उसका size जाता है from 5 micrometer to almost 100 micrometer, in a range of 5 to 100 micrometer. But there are also some cells which are very large in a size, as they have clearly mentioned about the some egg cells. So even a human egg is around I think 110 micrometer something. So these cells are typical cells जो जिनका size है, they are actually visible under a simple microscope as well. Okay, so what is my point of telling all this history geography of the cells कि कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन कैसा है? Only one thing, that the cells का जो size, it is highly variable. It is not a fixed size. They have a variable size. Even the typical eukaryotic cells जो हम लोग बोलते हैं, okay, even if there is an average size, but then even they differs in their साइज. तो जो मेरे पास कार्डियक सेल्स होंगे उनका साइज एंड शेप कुछ और होगा, जो लिवर सेल्स होंगे उनका कुछ और होगा. इन दैट वे विद इन ऑर्गेनिज्म आल्सो द सेल शोज वेरिएशंस, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन एंड देयर टिपिकल स्ट्रक्चर. सो आई होप तुम लोग को समझा व्हाट इज द टिपिकल सेल और व्हाट इज इट्स साइज बेसिकली. एनी डाउट टिल नाउ? Hello? Okay, so I hope there are no doubts. I will move on. Yeah, so जैसे कि मैंने just mention किया that the cells are almost in a size of micrometer and to some like 100 micrometer, or let's say maximum 1 millimeter. So it is not really easy to observe these cells by a naked eyes, right? हम लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसके मदद से हम लोग उसको देख सकते हैं. So what's come in a picture? The microscope. And Simple microscope. yes, so there are multiple types of microscope, but then if you go back in a history, people actually have started using a simple microscope सबसे पहले. So I will cover up just a minute again. I'm sorry. Yeah. So if I want to observe a typical cells or any microscopic material, we need to have a typical microscope. So okay, never mind. So there are two main types of microscope to discover किए गए थे. One is a simple microscope and another one is a compound microscope. I think simple microscope सबने देखा रहेगा even in a schools. Compound शायद नहीं देखा रहेगा because अभी बार कॉलेज में obviously तुम लोग देखोगे during your biology practical. Let's hope कि तुम लोग का कॉलेज जल्दी से जल्द start हो जाए and you will get chance to work in a labs. So what is the basic difference in a simple microscope and a compound microscope? So the name itself, simple मतलब क्या? It is only some kind of thing like जहाँ पे lenses होते हैं and the lenses help us to magnify a normal thing. So even your that magnifying glass can be considered as a simple microscope like thing. Okay, and it gives us magnification मतलब zoom in का properties only up to 50 to 100 times. Okay, but then it was okay, like the simple microscope was working very nicely for the cells जिनका size थोड़ा बड़ा था. But there are cells which are very very small in size, ranging from the like 5 micrometer, 10 micrometer, or even less than that. So for such cells, it was very difficult to observe these cells under a simple microscope, and we need something more advanced, right? And here comes in a picture then a compound microscope, because compound microscope gives me the magnification is of around 100 times or even more than that. So depending on which type of compound microscope I'm using, the magnification and the resolving power actually differs. So these are the different these are the two basic types of a microscope:
simple microscope and a compound microscope. Now taking forward the advancement of a compound microscope, so even the compound microscope was good, मतलब अच्छे से काम कर रहा था, but we always strive for something better. It's not like कि मुझे एक बार compound microscope मिल गया and I will now take it and I will use it for a forever, like कि जितना काम करेगा उतना काम करे, नहीं किया तो भी doesn't matter. It's not like that, right? We always try to find something better. So compound microscope, obviously it was a big discovery in biology, but then still there were few things which were not really able to discover or able to study using a compound microscope. So we need some more kind of advancement. And then there comes something called as a light microscope and an electron microscope. I will show you the images exactly how the simple and the compound microscope actually they look like. Okay, so before that, this is the, you can see this is actually a simple kind of microscope like thing जो use किया था Leeuwenhoek ने. So Anton von Leeuwenhoek was the first one जिसने बैक्टीरिया का सेल देखा था. उसका स्टोरी you should all read. Okay, I think he was some businessman or something like that. उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन बायोलॉजी और फिर उसने वो माइक्रोस्कोप खरीदी किया था एंड उसने बहुत सारा काम किया था. Like he used to observe different samples, blood samples, even the human semen sample उसने observe किया था. So he was the first one but जिसने बैक्टीरिया observe किया था. So उसका contribution to the microbiology is very remarkable. Okay, the name was Anton van Leeuwenhoek. Okay, so ये माइक्रोस्कोप उनका है जो उन्होंने 1600 में यूज किया था. Now, so these are the typical images of a simple microscope and a compound microscope. I think देख के you can differentiate कि yeah, this is just a small simple thing जहाँ पे एक glass stage है, नीचे एक mirror है which actually will be helping us to reflect the light or we can say to focus the sample. And there are, you can see this knob like structure. Okay, it's not working. Yeah, okay, I hope it's visible. So ये दिख रहा है सबको knob like structure. It is actually called as a fine and coarse adjustment के लिए जो होता है ना, you can actually turn it. तो हम लोग उसको घुमा सकते हैं like a tap जैसे हम लोग घुमाते हैं वैसे, and you can actually focus on. तो तुम लोग वो स्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हो. You can actually zoom in, zoom out kind of thing is possible in this particular kind of microscope. But if, as I mentioned, it is not a very highly recommended for a complex system and something like जो बहुत small है size में. Some जो बड़े हैं like compared like 50 micrometer से आगे जाते हैं, those things you can observe. Even you can observe the like typical plant cells and all because वो थोड़ा बड़े रहते हैं size में. But then you cannot observe bacteria and all in a simple microscope. So just thoda advancement in a simple microscope and you will get a typical compound microscope. So even यहाँ पे you can see there is a stage, यहाँ पे mirror है which will help in the focusing of light, और यहाँ पे then fine and coarse adjustment के लिए knob रहते हैं. यहाँ से हम लोग देखते हैं, this is called as objective. Sorry, this is called as eyepiece. यहाँ से हम देखते हैं and all these things are called as the objective things, which are nothing but the lenses. So this actually help us to give the magnification of the higher range. Okay, so these are typical simple and compound microscope. Then I said that even the compound microscope was not sufficient enough for a in-depth study, and that's why now we are having a typical light microscope and an electron microscope. Now why do we need a light microscope? Because अगर तुमने यहाँ पे देखा, there is a mirror, then there is no light source from the typical, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है. ये जो यहाँ पे लाइट यूज करते हैं हम लोग, दैट इज अ टिपिकल सनलाइट. तो हम लोग को दैट वाज द वन ड्रॉबैक वी कैन से कि अगर मुझे माइक्रोस्कोप यूज करना है तो मुझे उसको ऐसे जगह पे सेट करना पड़ता था कि जहाँ पे लाइट इज वेरी अच्छे से, लाइक लाइट इज कमिंग प्रॉपरली, देयर इज नो लाइक डार्कनेस और समथिंग लाइक दैट. You have to have a proper light in a particular area जहाँ पे
तुम लोग फोकस अच्छे से कर सकते हो. अगर लाइट ही नहीं है तो इट विल नॉट गेट फोकस एंड तुम लोग को कुछ दिखेगा नहीं. दैट वाज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन वी कैन से. To overcome this limitation, they came up with a light microscope. This is a typical light microscope. You can see it is same as what you've seen in a typical compound microscope. But यहाँ पे difference क्या आएगा? That in this particular light microscope, there is an electric supply of light. तो यहाँ पे एक lamp रहता है, and when you switch on the microscope, that lamp will get started. और तुम लोग को वहाँ पे light दिखेगा. So now you are no more dependent on external sunlight as such. तो बाहर लाइट हो ना हो, तुम लोग के पास क्लोज रूम हो, डार्क रूम हो, नथिंग. एज फार एज तुम लोग के पास इलेक्ट्रिक सप्लाई है, you can use this kind of microscope anywhere, and obviously even the magnification range was quite enhanced in this particular case. But still, the again, as I mentioned, हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है. We are not perfect. Biology will never get perfect. No, कभी भी ऐसा नहीं कि ओके मैंने ये पूरा सेल स्टडी कर लिया and there is nothing more to study. Each and every point in a biology is having a like ना diversions. कि तुम लोग उसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक है, बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है, which we are not completely aware. So what happened? People were able to observe the cells, but ना सेल के अंदर तक जाना पॉसिबल नहीं था. तो तुम लोग ने सबने पढ़ा था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गीज होते हैं, ER होता है, ये होता है, वो होता है. बट किसने देखा? Who had explained or who had proved that the cell has a mitochondria in it or the cell has a nucleus in it? On what basis we are proving that? Right? We need a proof. और अगर मुझे उसको प्रूव करना है, आई कैन गो फॉर सम बायोकेमिकल मेथड जहाँ पे मैं कुछ एसेस करूंगा लैब में एंड आई कैन प्रूव दैट. बट दैट इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड. अगर मैं आंखों से देख सकूं कि हाँ मुझे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, डबल मेंबर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग. But then if I want to go for such level of magnification and resolution, तो तब जहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप काम नहीं करता है. Why? Because लाइट का वेवलेंथ क्या है विजिबल लाइट का? लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 400 to 700 नैनोमीटर. एंड ये जो सब स्मॉल 400 to यस 700. 400 to 700. बट ये जो स्मॉल ऑर्गेनल से लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो इतना अंदर तक पेनिट्रेट करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल विजिबल लाइट. एंड वी नीड समथिंग जो ऐसे स्मॉल जगह पे भी जाके हम लोग को इमेजेस दे सके. एंड फॉर दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केम इन अ पिक्चर, because electrons have a very small wavelength, so that they can go in a very small things, like they will help us to visualize the small organelles like a ribosomes and even a mitochondrial structure. So that's why electron microscope. And nowadays, but you know, biological research is at a peak because we are having advanced technologies like a electron microscopy. So even electron microscope are of two types. I will not go in detail because that is out of your scope, but just mentioning it here because तुम लोग के textbook में mention किया है. Okay. So there are two main types of electron microscopy. We call it as a SEM and TEM. Now what is SEM? SEM is a scanning electron microscope and TEM is a transmission electron microscope. Okay. So now these are the images. तो लोगों को क्या लगता है? What is the first image? What do you think? What does the first image किसका होगा? क्या दिख रहा है इसमें? Anyone? Just predict, guess it. First image. No one? अरे just guess मारो. It's not something. मैं कुछ बोलूँगा नहीं मैं. It's just something. तुमको क्या लग रहा है? What is it? Cytoplasm or nucleus? The very first image you are saying? Yes. Yeah. So the very first image is not really a cytoplasm or nucleus. Anyone else? Golgi bodies? No. Ribosome. No. It is not. It can be prokaryotic or eukaryotic. कोई भी हो सकता है. So now without taking much time, मैं खुद ही बता दूँ. These are the bacteria. जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे colorful. These all are the bacteria. So you can see some small. Some of them are like circular and a quite purple color. और कुछ जो है थोड़े ऐसे elongated है और a pink color.
So you will study in the next part. There is something called as the Gram staining, a big discovery in the biology called as the Gram staining, given by a Christian Gram. ये हम लोग पढ़ेंगे in the next chapter, next part of a chapter, when we will start the prokaryotic वाला part. So Gram staining is of very important because it actually helped me to classify the bacteria. और ये जो first वाला image है, that is taken by a compound microscope, which is helping me to identify a gram positive and gram negative bacteria. Forget about the positive and negative part for now. But then what does it is showing? It is a typical bacterial culture. तो ये bacteria है. Okay. Now the second image जो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, some ball-like structure. What do you think? क्या है ये? Virus. Okay. Anyone else? Pollen. Sorry, मेरे को आवाज नहीं आया. Never mind. So ये जो तुम लोग को लग रहा है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया. It looks like virus, but it is not really a virus. ये है pollen grains जो हम लोग plants, we all know ना, plants produced by pollen grains. सर मैंने वही बोला. Okay, sorry, मैंने तो सुना नहीं था. Okay. So, yeah. So these are regular pollen grains. So this is an image taken by an electron microscope. Just imagine कितना clarity है और कितना in-depth information it is giving you. So this is a typical image taken by an electron microscope called as a SEM, scanning electron microscope. Then the third image over here. I know it's not that clear, but what do you see here? कुछ दिख रहा है क्या ऐसे typical? Yes. What is it? These are actually a cancerous cells. Okay, this is a real image. ये मेरा खुद का image है, and it is not clearly visible because इसको stain नहीं किया था. Why we had not stained it? Because ये जिंदा cells थे. This was the live imaging of a cells. So that's why. But you can clearly see there are something on a platform. So they have a typical shape and all. They are growing very nicely in a medium. So these are a typical, again, a light microscope imaging, जिसको हम लोग special type of microscopy बोलते हैं, confocal microscopy. No details, but I'm just trying to show you different images of a microscopy. And now the last one. ये क्या है? ये बताओ. Mitochondria. Mitochondria. Yes. So this is the mitochondria, and someone also had mentioned something called as Golgi and all. So you can see इसके बाजू में there are some like Golgis, and you can see the structure. This is a endoplasmic reticulum. So can you tell me which type of endoplasmic reticulum it is? It is a smooth or a rough endoplasmic reticulum? Yeah, endoplasmic reticulum. हाँ, but ये कौन सा है? Smooth type है या rough type है? Rough. Yeah, because Rough. you can see Rough. small dots on a that particular structure. That small dots are nothing but the ribosomes. And these ribosomes, actually, we all know there are two types of endoplasmic reticulum जो हम लोग पढ़ेंगे आगे. And that will be, okay, there are a lot of noise, I think. Yeah, thank you. So this is a typical image taken up by again electron microscopy, and you can clearly see the mitochondria, the endoplasmic reticulum, and there are many other things in a picture. So this is a level of magnification we get by using a electron microscope. I hope you understood the concept of a microscopy and the types of a microscope, like simple and a compound, and a light and an electron microscopy. Any doubts till now? No. No. Great. So Sir, hello sir. yes. बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है किसी के तो माइक से बहुत Yeah, actually, so it's really किसी जिसका भी mic on है, please try to keep it on a mute. It is not having a typical regular shape. कैसा हम लोग बोल नहीं सकते कि हाँ humans का सब cell circular है, virus का सब ovoid है, not like that. There is no such classification exists for a typical cell shape. However, in a typical organism, the cell may have a spherical shape, rectangular shape, flattened shape, polygonal shape, oval shape, triangular shape. Even they can be a conical or a columnar. So these are the possible shapes which were observed for a typical cells in a different organism. But then there is no fixed rule as such कि हाँ यही cell का shape होना चाहिए. No, the cells can be having a different types of shapes, and they can be even irregular. Then
because in a bacteria, there is a term called as pleomorphic. It means the bacteria does not have any typical shape. It is just an irregular kind of mass you can observe. So even in a human case, or even I can say to be more precise, in a eukaryotic, human को जरा specific हो जाता है, but there are multiple eukaryotic cells as well जिनका कोई specific shape नहीं होता. Then coming towards the size, तो as we had discussed कि मतलब उनका size starting from अगर मैं बैक्टीरिया से देखूँ तो 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, और अगर यूकैरियोट्स को जाओ तो 5 माइक्रोमीटर to around 100 micrometer and sometimes up to 1 millimeter, only for some kind of egg cells and all. That is a gametic cell, you can say. Okay, but then these are, so not all of them are like very big in size, right? Some kuch to 5 micrometer ka bhi hai. So not all of them are like visible by a naked eye. First point. Some of them are like barely visible, like you can see a point structure, but you cannot really say कि हाँ जो मैं दिख रहा हूँ वही सेल है करके. But then some of them are macroscopic, हाँ, like a frog egg or a human egg like structure जो हम लोग simple microscope में भी देख सकते हैं. But then as I mentioned again, यहाँ पे variety बहुत ज़्यादा है. तो a smallest cell जो हम लोग देखा है, that was seen in the case of mycoplasma, which is about 0.3 micrometer. Now what is mycoplasma? Mycoplasma is a bacteria. This particular bacteria is a special case. Why? Because ये bacteria होके भी उसके पास cell wall नहीं होता. So it is called as a bacteria without a cell wall, and उसका नाम है mycoplasma. It is very small kind of organism जिसका size है 0.3 micrometer. Okay. Then a typical bacterial cell जिसका size आता है 3 to 5 micrometer, but sometimes 1 micrometer का भी होता है. So they have given an average size. Okay. So don't stick to the numbers. Try to understand the concept. Then the largest cell is still in the case of ostrich egg. I think almost all the eggs are quite macroscopic in a size. तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो ostrich का egg होता है, and that actually its size is in a range of 15 centimeter. Just imagine, अब तक हम लोग बात कर रहे थे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, but जो ostrich का egg का size है that is around 15 centimeter. Okay. And then if I go by lengthwise, then as I mentioned previously also, the nerve cells or the neurons can be the longest cell in a body, because starting from a brain to the toe of my body, itna bhi bada ho sakta hai. Okay. So this is something about the size and the shape of a cells. I hope there are no doubts up to this because we have already discussed kiya hai. But still, if there are any doubts, any suggestions, just unmute yourself and you can ask me. ओके, सो नो डाउट्स कंसिडरिंग दैट. आगे बढ़ते हैं. सो अभी तक हमने देखा अबाउट द सेल, उसका बेसिक फंक्शन एंड ऑल, साइज देखा, शेप देखा, और ओके. बट देन लोगों ने स्टार्ट कब किया ये सेल पढ़ना? व्हेन डिड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग द सेल? सो यस, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी किया था, ही प्रपोज्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल एग्जिस्ट. बट देन उसको आगे कौन लेके गया? So there is something called as a cell theory, which was proposed by Schleiden and Schwann. Do you know any idea of what was the cell theory? क्या बोलते हैं Schleiden and Schwann? है कौन है दो बंदे पहली बात तो, और उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग? So जो एक्चुअली इट इज अ पेयर ऑफ अ zoologist and a botanist. तो एक ने प्लांट सेल्स पे काम किया था, एक ने एनिमल सेल्स पे काम किया था, दोनों मिलके देखा कि हाँ कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेम है, एंड देन दे प्रपोज द थ्योरी. सो व्हाट डज द सेल थ्योरी सेज? दैट ऑल द लिविंग थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड द सेल इज एक्चुअली अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ. एंड आई थिंक वी ऑल अग्री टू दिस. दिस इज वाज द बेसिक्स. हम सब जो बोल रहे हैं लिविंग सिस्टम है, वो सब लिविंग सिस्टम का एक ही फंडामेंटल यूनिट है, एंड दैट इज द सेल. And that's why all the living stuff जो हम लोग के पास present है अभी on earth, that is composed of one or more types of cells. So makes sense, right? But then there is a one limitation of this particular thing. Can you tell me क्या हो सकता है limitation of this particular cell theory? Anyone? क्या कमी लग रहा है इसमें? कुछ ना कुछ तो कमी है उसमें.
हेलो. Functional. ओके, सो एक्चुअली जो भी कुछ बोला आई कुड नॉट हियर, तो कैन यू प्लीज रिपीट? सर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स का. Yeah, so that is a typical sentence given in the textbook. No problem. So actually वायरस में सेल नहीं है सर. वायरस में सेल नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते, because now virus is a all okay. So viruses are called as a obligate parasite. Okay, I will just note down the things in a chat box. Those who are not this term. Okay, obligate parasite. All the viruses, no matter वो कौन सा है, प्लांट का है, एनिमल का है या बैक्टीरिया का है, they are called as obligate parasite. Now what is a parasite? ऐसे organisms जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. And when I say obligate parasite, what do I mean to say? कि ये लोग तो ना हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा उनको एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर जाके वो ग्रो हो सकते हैं. तो वायरस को हम लोग ना कंप्लीटली सेल नहीं बोल सकते, एक्चुअली इट इज अ पार्शियल वी कैन से. सो दैट्स व्हाई ना viruses are called as a connecting link between the living and a non-living system. They are not a true cells. क्यों? Because जब भी वो बाहर होते हैं किसी भी like environment में, तो वो they act as a particles. They are not actually living. They cannot multiply. But जब भी वो किसी host के अंदर जाएंगे, किसी इंसान को इन्फेक्ट करेंगे, तब they will start the multiplication and division steps. So that's why जब भी वो किसी के अंदर रहेंगे, like basically inside a host cell रहेंगे, we generally say viruses are living basically inside a cell. But जब भी वो बाहर रहते हैं, they are not considered as a living cell. Like they are there, but they cannot divide and they cannot infect anyone जब भी वो बाहर रहते हैं. So that's why they are not called as a true cells, but they are called as a connecting link between the living system and a non-living system. Okay, so समझो तुम्हें और स्टिल कंफ्यूजन है? हेलो. समझा. Okay, great. So now as he clearly mentioned the thing that कि क्या ड्रॉबैक था कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ओके सेल्स आर बेसिक यूनिट, बट ये सेल्स आता कहाँ से, व्हाट इज द लाइक ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल्स. तो दे कुड नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग. वो लोग बता नहीं पाया कि वो क्या है करके. उन्होंने थ्योरी तो बोल दिया विच इज वेरी क्लियर एंड राइट थ्योरी, बट वो क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो नहीं बता पाए. एंड देन वन मोर साइंटिस्ट केम इन अ पिक्चर. उनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ. उन्होंने बोला that each cell actually coming from a pre-existing cell. Okay, so he was the first one at that time. You know, ये concept दिया जाता, new cells actually formed by cell division of a pre-existing cells. Okay, तो उन्होंने एक typical उनका वो टाइम पे I think it's Latin that omnicellula ecellula, जिसका मतलब है कि हर एक सेल pre-existing cell से आता है. तो cells divide and they give rise to the new cells. That's how. Okay, so then the picture was quite clear about the cell theory. So this was the original cell theory which was proposed by a Swan Schleiden, and then which was then quite modified by a Rudolf Virchow by saying that each cell is coming from a pre-existing cell. Okay, then still there was few things which was pre-existing cell, मतलब वहाँ पे एक सेल होगा. ओके, देयर मस्ट बी अ वन सिंगल सेल जो पहले से प्रेजेंट होगा. सो इवन रुडोल्फ वर्चाउ कुड नॉट गिव एक्सप्लेनेशन, कि वो भी नहीं बता पाया था कि सबसे पहला क्या हुआ, मतलब सबसे पहला सेल कहाँ से आया, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ था. इवन ही कुड नॉट गिव एक्सप्लेनेशन, बट वो क्या बता पाया कि ओके देयर वाज वन सिंगल सेल जो पहले से था, एंड दैट सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड गिव राइज टू द न्यू सेल्स, एंड दैट्स हाउ अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म्स. अभी अगर तुम लोग को जानना है कि सबसे पहला सेल कैसे बना, द आंसर टू दिस क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा इन वन ऑफ द चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स बेसिकली. तो इन दैट वी विल गेट टू नो कि सबसे पहले प्रोटीन्स बने,
प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, फिर दे कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म ऑफ वन पर्टिकुलर लिविंग सिस्टम एंड ऑल. सो इट इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, जो अभी मैं बिल्कुल भी कवर अप नहीं करने वाला. बट व्हाट डू आई मीन बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल? उसका मतलब है कि ऐसा सेल जो पहले से प्रेजेंट था, and that one cell will divide and redivide to give rise to the new cells. तो वहां से और सेल प्रोड्यूस होगा. Okay, great. So now still as I mentioned, even though उन्होंने explain किया था and all was there, but it was not very satisfactory thing. मतलब इतना भी वो convincing नहीं था. There are few many things, there are few more things जो actually missing था from a traditional cell theory. And to overcome that thing with the advancement in technology and studies, एक नया concept आया जिसको बोलते हैं modern cell theory. तो what is the postulates of this modern cell theory? वो क्या बोलता है? तो few things are common जो हमने cell theory में पढ़ा था. First thing, that all the living organisms are made up of cells. Living cells arise from a pre-existing cells. A cell is the structural and functional unit of life. Okay, तो ये 3 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे इन अ सेल थ्योरी. मतलब इसके आगे और 3 पॉइंट्स ऐड हो गए थे, which includes that the total activities of a cell are responsible for the activity of an organism. अभी इसका मतलब क्या है? As I mentioned that each cell itself is a system, right? हर एक सेल के पास अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, and they can control their activity. तो हर एक सेल में there are multiple metabolic processes होते रहते हैं. What do I mean by metabolic process? So it includes something called as anabolism and catabolism. What is anabolism? मतलब कुछ तो प्रोड्यूस करना, they can make their own things. And catabolism मतलब to degrade, to break down the things and make something for their benefits. तो अगर मुझे वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना है, एग्जांपल देना है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, जहाँ पे हम लोग को पता है कि क्या होता है. ईच प्लांट सेल एक्चुअली अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे वो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक. तो ईच ऑफ द सेल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द फोटोसिंथेसिस. इट्स नॉट लाइक ओनली कुछ सेल ही काम करते हैं. नो, ऑल द सेल्स व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ प्लांट, दे कंट्रीब्यूट टू द फोटोसिंथेसिस. ओके, हाउएवर, तो अभी खाना तो बन गया, एनाबॉलिज्म तो हो गया. तो व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर प्लांट्स रिक्वायर एनर्जी, वो लोग क्या करते हैं, ये जो बना बनाया खाना होता है उनके पास, उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू गेट एनर्जी. ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. तो ये जो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, दैट इज टिपिकल सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रेस्पिरेशन. बट फॉर नाउ जस्ट एन एग्जांपल that each and every cell is involved in a metabolic activity, which is mainly consist of an anabolic and a catabolic reactions. Okay, I hope I am clear. Then the cell shows a transformation of energy. So we all know law of conservation of energy. Energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can always be transferred from one system to the another system. So similar thing happens over here also. जो भी सेल्स के पास एनर्जी है, दैट विल बी गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, जब भी मतलब वो सेल का लाइफ टाइम खत्म होगा, जब वो सेल मर जाएगा, द एनर्जी विल बी पास ऑन टू द नेक्स्ट सेल बेसिकली. दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ सेल शोज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज लाइक द सेल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ डीएनए एंड आरएनए, which is present in a nucleus and a cytoplasm respectively. So DNA होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, और RNA can be present in a cytoplasm and also in some organelles like mitochondria and a chloroplast. Okay, so this is a typical concept or a postulate given by the modern cell theory. Now there is a question by Siley that she is asking, what would be the definition of a modern cell theory? So there will not be a definition as such. When we say theory, it is like someone has proposed something. किसी ने कुछ तो प्रपोज किया है और उसने उसको प्रूव किया है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ that is correct. तो what is modern cell theory? तो basically what was cell theory? कि Scrieden and Swanne brought that okay, all the cells are composed, all the organisms are composed of a cell,
and cell is the basic unit of life. Now that was true, but not sufficient to understand the cell biology. तो जब लोगों ने और काम किया, they found many more things like okay, the cells consist of nucleus, RNA, DNA. They show transmission of energy and they show anabolic and catabolic process as well. तो जब ये डिस्कवर किया एंड दे प्रूव दैट कि हाँ ये सब प्रोसेसेस होता है एक्चुअल सेल्स में, देन दे एक्चुअली मॉडिफाइड द ओरिजिनल सेल थ्योरी. एंड जब उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, सो दैट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ सेल थ्योरी इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न सेल थ्योरी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. It is a modified version. Okay, yes. And then Hemang, yeah, no problem. Then Hemangi is asking about the point 4. Yes, so the total activities of a cell are responsible for an activity of an organism. So let's say, let's take example of a human beings. Okay, so we all take a food because food is a source of energy for us. तो जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं, वी ऑल नो कि वो खाना गेट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, राइट? इट्स नॉट लाइक कि हम लोग जो खाते हैं वो ऐसे ही सब बाहर निकल जाता है. नो, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. द फूड विल एक्चुअली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज अल्टीमेटली. तो हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक स्टार्च खाते हैं एंड ऑल द कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं. बट अपने बॉडी में देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स व्हिच एक्चुअली ब्रेक डाउन द complex material into the simple ones. Okay, so this is a process जहाँ पे हम लोग complex material को simple में break down करते हैं. इसको बोलते हैं catabolism. And it is very important ना. अगर let's say मैंने आज potato खाया and my body is not able to digest the potato, there is no point in eating up the potato because then it will not help me in any way for energy, right? So that's why catabolism is something which will help me to break down the potato or let's say starch जो मैंने खाया है to the simple carbohydrates, let's say glucose. तो अभी ये ग्लूकोज मैंने खा लिया, तो इट्स नॉट लाइक ओके आज मैंने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया है तो दैट ऑल द ग्लूकोज विल गेट यूटिलाइज इन अ सेम वे. नो, अपने बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होता है कि ओके दिन में हम लोग को इतना ही ग्लूकोज चाहिए. तो जो भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है तो बॉडी उसको फेंक नहीं सकती, राइट? अपना बॉडी इज वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम. Like even though we cannot maintain a typical pattern, हम लोग को जितना भी खाना हम लोग खा लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं, but the body has a very strict rules to follow. तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा बॉडी के पास, which is very important thing for a body, which is important because it is a source of energy, right? तो बॉडी क्या करेगा, वो सब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लेके लीवर में लेके जाएगा एंड लीवर में इट विल बी गेट स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जहाँ हम ग्लाइकोजन को बना रहे हैं. तो यू अंडरस्टैंड जो मैंने बोला कि कैटाबॉलिज्म, ओके, जो हम लोग खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना, जो हम लोग खाए हैं उसको वापस से स्टोर करना एंड ऑल. So these are different activities. So whenever I am saying body, it's not the just the entire body. It is actually typical cells which are doing all these functions. So that's why all this process like anabolism and catabolism needs to be maintained in a body, and these are carried out by different cells in our body. So that's why they have said that the total activity जो रहता है body का, may it be catabolism or anabolism, ये जो होता है वो सब cells में होता है, and that actually contribute to the total activity of organism. I hope this is convincing. Okay, I think I hope you got at least थोड़ा point जो मैंने बोला. Just give me a second, मेरा laptop is discharged. I will just put it on a charge. Yeah, sorry. So, Himangi, did you understand मैं क्या बोल रहा था? Hello?
Himanvi? sir. Yes. Okay, so I think she is not able to hear. Maybe network issues are there. But मैं कल वापस से explain करूँगा. There are no worries